Yes, all set for this wonderful match to get underway. The two umpires in all readiness. Lights, camera, action, playtime. Nicely cut away into that deepish point region. Off to a confident start here. Aniket Kawade, the big daddy at the G.S.T. And now on strike, that very prolific and the flamboyant left-handed batsman who's already played for the Mumbai under-19 team. That is Vedanta Gadia. He will be facing Mr. Amrit, the Deputy Director of the DRI. This team is being led by the Director, Sports Authority of India, Sri Pandurang Chate. Yes, Customs and G.S.T officials playing this wonderful match. It's a beautiful scene out here at the G.S.T. This ground beautifully decked up. Yes, so one of the best grounds that we have in this part of Mumbai. Down the leg side. Yes, adjusting his line and length to a left and right hand combination is going to be a sort of a challenge here. But nice and smooth run up, good approach to the bowling crease, good technique. Slightly short in length, nicely getting behind the line of that ball. A confident, firm push, a good defensive shot from Vedant. Having won the toss, the I.R.S. team has decided to bowl first. And yes, taking first strike is Team G.S.T. अच्छा बाउंस मिलता हुआ उस पिच पे से बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी क्रीज के डेप्थ का काफी अच्छा इस्तेमाल किया और बैकफुट पर पंच किया. डिपिश बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में पहला चौका अंकित किया है अपने इस इनिंग्स का वेदांत गाडिया ने. सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी. इस नई गेंद के साथ थोड़ी सी शरारत करानी होगी. थोड़ी सी पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला और बड़ी आसानी से उस सिंगल को प्राप्त किया. रन संख्या बढ़कर अब 7 रनों पर. अच्छी रफ्तार को पाते हुए यहां पर पहले ही ओवर में अमृत अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहते हुए बल्लेबाज को, लेकिन ये दोनों ही शानदार बल्लेबाज है. अच्छी गेंद, the probing line and length, bowling that corridor of uncertainty. Much better, fuller in length, getting some good shape on the ball, good seam presentation. Nicely behind that ball, getting into a good position, just giving it the direction. Good bit of work by the man stationed in that point area. End of a reasonably tidy over. End of the first over, the scoreline reads 7 for no loss. Yes, just to let the I.R.S. team know that the two batters on strike are really two of the very best that Goregaon Sports Club has. So yes, this will be a good test here for the bowlers of Team I.R.S. Ashok Chakrabarti, the
The Deputy Commissioner of Customs bowling from the infinity end, that is the combox end, just putting bat to ball, nicely timed into the gap. Not such a bad delivery first up. Nicely leaning into that shot. A good firm push into the gap. 4 precious runs added straight away into double digits. 11 for no loss. Off to a good start here, G.S.T. वाइट का इशारा एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा, उस एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या अब 12 रनों पर। इस इनिंग्स का दूसरा ओवर इस वक्त मार्गस्थ है। अच्छी लाइन, सीधे सीधा थोड़ी सी डिफेंसिव फील्ड को सजाया है कप्तान पांडुरंग चाटे ने। छोटा सा रनअप, लेकिन अच्छी एरिया में गेंद को लगातार लैंड कराते हुए अशोक चक्रवर्ती ज्यादा गौर फरमाते हुए अपनी लाइन और लेंथ पर, ना के रफ्तार पर। थोड़ी सी शॉर्ट इन लेंथ डिलीवरी, काफी सटीक तरीके से उस गेंद के पीछे आए और शानदार तरीके से टाइम किया अपने पंच शॉट को, लेकिन डिपिश पॉइंट पर एक फील्डर को बिल्कुल उसी शॉट को रोकने के लिए तैनात किया है। केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त किया, 14 रन बिना कोई नुकसान के। जैसे ही अपने इस स्पेल में आगे बढ़ रहे अशोक चक्रवर्ती, थोड़ी सी तेज रफ्तार से अब गेंदबाजी करते हुए, थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को सीधे सीधा एडजस्ट करना एक चुनौती होगी। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, बिल्कुल सर्कल के एज पे वो मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर खड़े, काफी समय मिला कि बड़ी आसानी से उस एक रन को मुकम्मल करे। 16 रन बिना कोई नुकसान के। स्ट्राइक पर अनिकेत कवाड़े। ड्राइव किया हमारे एसके सनन साहब, जो कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, उनके दिशा में वो गेंद गई। हर साल इस तरह का ये मैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस टीम और जीएसटी के बीच होता है हर साल। अच्छे माहौल में इस मैच को इस वक्त हम खेलते हुए। देखिए किस तरह से वो गेंद बड़ी तेज रफ्तार से ऑफ द विकेट उठी, थोड़ी सी दिशा से भटके थे। ये गेंद एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत ही आला गेंद होती। वाइड के रूप में 5 रन्स मिले। अपने डिलीवरी स्ट्राइड में बिल्कुल अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, गुड स्टैमिना। थोड़ी सी लाइन और लेंथ को थोड़ा सा ठीक ठाक करना होगा। दो ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बिना कोई नुकसान के। एक अच्छी साझेदारी प्रस्तापित होती हुई है दोनों ही शानदार बल्लेबाजों के बीच। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के 2 आधार स्तंभ प्लेयर्स अनिकेत कवाड़ी और वेदांत गाड़िया अगर अपनी रंगत में आकर उजागर होकर बल्लेबाजी करेंगे तो एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा टीम I.R.S को। दूसरी तरफ अगर इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाबी प्राप्त होती है यहाँ पर I.R.S टीम को, तो कहना होगा कि ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत होगी। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है इस वक्त, भविष्यवाणी करना यानी कि खतरे से खाली नहीं।
डेप्यूटी डायरेक्टर DRI गेंदबाजी करते हुए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये गेंदबाज काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज है। अच्छा स्मूथ रन अप, अच्छी तकनीक और काफी अच्छी रफ्तार ऑफ द विकेट जनरेट करते हुए अमृत। थोड़ा सा पिछली खेला, कुछ समय तक दिल हलक में था, लेकिन पूरी तरह से 100% एफर्ट लगाया था, अपर कट किया था, जिसके चलते वो गेंद पॉइंट पर तैनात फील्डर के सर के ऊपर से निकली और जैसे ही वो गेंद उनके सर के ऊपर से निकली, 4 रन तो मिलने ही थे। एक करारा जवाब दिया उस छोटी सी गेंद। अच्छी वापसी की, नपीतुली गेंदबाजी। इसी एरिया में कंसिस्टेंटली निरंतर गेंदबाजी करना होगा, इसी जगह पर। 29 रन। पूरी तरह से अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज गेंदबाजी को मेरिट पर ट्रीट करते हुए इस फेस्टिवल मैच को बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैच के बतौर ट्रीट करते हुए ये दोनों ही टीम्स, दे आर प्लेइंग इन ऑल सीरियसनेस, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मैच। There was a nick in it. There was a big nick in it. But yes, well bowled. Change in pace there was. That was a little slow to the air. Nicely bowled. The ball also keeping slightly low. Yes, we have seen those kind of inside-ish edges going into the stumps umpteen times, haven't we? Aniket Kawade was fortunate that the ball did not ricochet off his bat into the stumps. 1 run added. Nicely done. Straight to the man at point region. That is Mr. Jay Upadhyay, sir, the additional commissioner of the G.S.T. End of 3 overs, 31 for no loss. Off to a fantastic start here. Still early days. They are bowling a good line and length, no doubt about it. The only challenge for both these bowlers has the kind of adjustment that they've had to make to that left hand right hand combination. But yes, they have bowled impressively. Ashok Chakravarti to continue from the combox end. Very well bowled. That is what you would call bowling into that business area. That's a probing line and length, ideal line and length. Steps out and just puts it away. That's a fantastic inside out shot. He really walked into that shot, trying to get out of the crease even before the bowler could really finish his bowling action. A good free flow off the bat. आक्रामक खेलना उनकी फितरत में ही है। उस करारे चौके के साथ रन संख्या अब 35 रनों पर जा पहुंची है। गति में परिवर्तन किया, लो फुल टॉस, गैप में खेला, चलिए 4 रन मिलने ही है। जैसे ही वो गेंद सनन सर के बगल से निकली, 4 रन मिलने ही थे।
पटकी हुई गेंद, जितनी फुलर लेंथ डिलीवरीज इस ओवर में की, सभी गेंदों पर चौका प्राप्त हुआ। और इस पटकी हुई गेंद पर भी थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में होने के बावजूद एक करारा जवाब दिया, 4 रन मिले। रन संख्या जा पहुंचती है 47 रनों पर, 4 बैक टू बैक बाउंड्रीज। Aniket Kawade at his very best. Off to a fantastic start here. This is a dream start here for the Goregaon Sports Club. Both Aniket and Vedanta Gadia really trying to make the most out of this opportunity. Slightly wideish delivery, quite the right call. Trying to keep that delivery away from the range of Aniket. Yes, Ashok Chakravarti has really been taken to the cleaners in this over by Aniket Kawade. Nicely bowled, playing with soft hands. Not letting any opportunity of a single being taken. Score at the end of 4 overs is a handsome 49 runs for no loss. All wickets in hand. A fantastic flourishing partnership by two of the best batters of the G.S.T, Aniket Kawade and Vedanta Gadia. बिल्कुल एक आक्रामक रवैया इख्तियार किए हुए अनिकेत कवाड़े बिल्कुल अपना आक्रामक रंग पेश किया है और अब गेंदबाजी करने के लिए उतरते हुए शिवाजी यादव। ये एक बहुत ही उम्दा गेंदबाज है। कस्टम्स की जो टॉप टीम है उसके लिए लगातार प्रतिनिधित्व करते हुए जबरदस्त हुनर प्रतिभा इस गेंदबाज के पास। ये एक अच्छा मुकाबला होगा अब अनिकेत और शिवाजी के बीच। चलिए वो ऑफ द सीम काफी तेज रफ्तार से अंदर की तरफ आई। पहली ही गेंद बिल्कुल सही एरिया में लैंड कराई। काफी अनुभवी गेंदबाज है, एक ब्लॉकबस्टर प्लेयर है टीम IRS के लिए। कस्टम्स का ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेयर। ऑफ द विकेट गेंद काफी तेज रफ्तार से अंदर आती हुई। इसका मतलब यही है कि सीम पर गेंद को लैंड करा रहे शिवाजी यादव जो कि कस्टम्स के इंस्पेक्टर है। थोड़ी सी दिशा से भटके, इतनी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन T20 में देयर इज नो रूम फॉर एरर, नो मार्जिन फॉर एनी एरर। थोड़ी सी गलती और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। देखे किस तरह से पोजीशन में आया और करारा जवाब दिया। इतनी खराब गेंद भी नहीं थी, पूरी तरह से रफ्तार का सटीक इस्तेमाल किया। चौका मिला, 53 रन, 50 runs up on the board for GS in good time. Nicely leaning into that shot. वो जो वेट ट्रांसफर था बहुत ही बढ़िया था। It was all about that transfer of weight. Nicely done. अच्छी वापसी की, अच्छी विकेट कीपिंग भी। थोड़ा सा ऑड बाउंस था, गेंद हल्की सी नीची रही थी। ये बहुत ही अच्छा मुकाबला है, एक क्वालिटी गेंदबाज बनाम एक क्वालिटी बल्लेबाज। This is a good sight here. Very well bowled. Straight away showing his promise and talent here, Shivaji. He has indeed bowled a tight line and length. Apart from that delivery that had some room on offer, the rest of the deliveries have been spot on.
nicely turned away around the corner. जब आप एक क्वालिटी बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हो तो बिल्कुल जरा भी मार्जिन नहीं है एरर के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 58 रन बिना कोई नुकसान के। बहुत ही जल्दी गेंद की लंबाई को भापा, पूरी तरह से अपने क्रीज के डेप्थ का सटीक इस्तेमाल करते हुए खड़े हुए टोस पर राउंड द कॉर्नर टर्न किया। अ गुड रिस्टी शॉट। बड़ी आसानी से उस चौके को मुकम्मल किया। रन संख्या है 5 ओवर के बाद 58 रन। और अब स्वयं कप्तान गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं द डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री पांडुरंग चाटे सर। गए साल भी इन्होंने इस तरह के मैच को खेला था, काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। इज अ वेरी पैशनेट स्पोर्ट्समैन, अ गुड क्रिकेटर। और यस, डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी है उनके कंधों पर। और बिल्कुल हम यस चाटे सर, अरुण डोडी इज हियर, इज कम। थैंक यू, अ राय स्माइल फ्रॉम हिम। चलिए, जिस तरह की एक्शन है, गेंद बाहर की तरफ निकलेंगी, ये उनकी स्टॉक डिलीवरी है। बल्लेबाज को छोड़ती हुई जो गेंद थोड़ी सी ऑफ द सीम निकलती हुई। फुल लेंथ डिलीवरी, ड्राइव किया मिड ऑफ के क्षेत्र में। शिवाजी मौजूद, केवल एक ही रन प्राप्त होगा। 59 रन बिना कोई नुकसान के। स्ट्राइक पर अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वेदांत गाडिया सामना करते हुए पांडुरंग सर का। वाइड गेंद, अच्छी गेंद। 61 रन बिना कोई नुकसान के। इंडियन रेवेन्यू सर्विस टीम के ये सभी दबंग ऑफिसर्स, yes sir, quite a few top brass officers are playing in this festival match. Commissioner, additional commissioner, deputy director, yes, this is the top brass playing here. All dynamic officers. A man stationed in that point area, just a single added, takes the score line to 62. That is Prasad Pawar in the deep. Yes, Prasad Pawar will have a big role to play here tonight if team I.R.S has to win this one. It's played for the Mumbai team. Prasad Pawar is the Mumbai Ranji player. थोड़ा सा लेट खेला अपने शॉट को वेदांत ने, जिसके चलते इनसाइड एज लेकर गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में न आती हुई मिड ऑन के क्षेत्र में गई। वेदांत गाडिया इस सीजन में काफी
फोकस्ड नजर आया है। देखिए इस मैच को भी बिल्कुल बड़ी शिद्दत से खेलता हुआ, इन ऑल सीरियसनेस, is put a price on his wicket, is playing that correct shots, going by the book, looking to spend some quality time at the wicket. That was well bowled. Yes, all these dynamic officers of the Indian Revenue Service, they have got that big responsibility of making sure that the Indian treasury is all quite full. Yes, they lead a very stressful life. No time schedule. You really got to be up to the task. Got to be very alert and very vigilant. They are a bunch of fantastic officers, quite dynamic and upright officers. It's great for the Goregaon Sports Club to be playing host to such wonderful dignitaries who really take care of that Indian treasury. Shivaji Yadav, a change in ends for him. Bowling to Vedant. The scoreline 64 for no loss. The two umpires for this match, Ajit Putran sir and Mr. Raju Pawar. Two very seasoned campaigners, two of the best umpires in Mumbai. Well bowled, nicely bowled, ideal line and length, well played as well, good technique, playing late, close to the body, right under the nose. That ball meeting the meatiest part of the blade. That defensive shot was played with a positive intent. Playing with soft hands this time, just opening the face of the bat. Taking the single and getting Aniket back on strike. 65 for no loss. This is an absolute flying start, a dream start here. After losing the toss, they were invited to bat first, and both these batters really making the best out of this, making the most out of this wonderful opportunity. He gets his man, the first wicket there. Aniket was slightly late on that one. You got to say that he was beaten all ends up, lock, stock and barrel. And the well set Aniket Kawade taking that sorry walk back to the pavilion. The first wicket there for Team Indian Revenue Service. That will make Jai Upadhyay sir feel good. A good flourishing innings of 33 of just 24 balls with the help of 6 boundaries. Yes, a good knock, a good useful contribution. Indeed, very well bowled by Shivaji Yadav. In comes Shankar, very experienced. This is a good start. A solid foundation has been laid. So इस वक्त काफी अनुकूल स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हुए शंकर, पांडुरंग चाटे सर, डायरेक्टर साई, एसके सनन सर, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, जय उपाध्याय सर, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी, मिस्टर विशाल जरोंडे, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी, मिस्टर अशोक चक्रवर्ती, डेप्यूटी कमिश्नर कस्टम्स, मिस्टर मनीष यादव, डेप्यूटी कमिश्नर कस्टम्स, मिस्टर अमृत, डेप्यूटी डायरेक्टर डीआरआई, मिस्टर प्रसाद पवार, कस्टम्स इंस्पेक्टर, शिवाजी राव, इंस्पेक्टर कस्टम्स, प्रथमेश,
TA Customs and Nilay Bankar, Deputy Commissioner Customs. तो ये स्क्वाड है प्लेइंग 11 इंडियन रेवेन्यू सर्विस टीम का. उस विकेट के चलते एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा टीम I.R.S में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था. बड़ा विकेट प्राप्त हुआ है. दैट इज बिग फिश इन द नेट. Aniket back in the hut, and it is Ram to take guard. Shankar. Very well bowled. He's found his rhythm. He's bowling such an immaculate line and length. He's bowling with a purpose, bowling with good pace in the right areas. This will be a test of character here for Shankar. Shankar quite early in the innings. Nicely getting behind that one, Shankar. He is a very good bat, good experience behind him. He will be looking to stay at the wicket for some time. Just give good company to Vedant, play the waiting game. He will be trying to go by the book. Change in length. That was a fuller length delivery. Opening the face of the bat. Just steering into that deep point area. Off the mark here. A confident looking shot. Scoreline at the end of 7 overs, 66 for 1. The last over went for just 2 runs, and that big wicket of Baba. Pandurang Chatesar to continue from the far end. A change in ends. It's going to be Shankar on strike. Trying to get back into the match here. I.R.S. Quite some cricket left to be played. Wanting to pick up that ball one hand. That single easily taken. $67. $69. This is just the kind of approach that somebody like Vedant has to have. Never mind what match he plays, what format he plays. He's got to try and stay at the wicket, go by the book. He's got to be disciplined in his approach.
staying at the wicket is such a good habit to cultivate, isn't it? अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है कि आप विकेट पे डटे रहोगे, गेंदबाजी को मेरिट पर ट्रीट करोगे, तो बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े लेवल पर ये काफी काम आएगी, ये चीज, ये आदत काफी काम आएगी आपको. Nicely driven downtown by Shankar. This is a good tidy spell by Pandurang Chate, trying to make their way back into the match after the dismissal of Aniket Kawade. The scoreline at the end of 11 overs is 71 for the loss of just one wicket. थोड़ी सी कश्मकश में है कि शिवाजी को वो गेंद दी जाए या नहीं. उनके दो ओवर्स को बैक किया है. चलिए अब गेंदबाजी में उतरते हुए प्रसाद पवार. ये शख्स किसी भी तरह से कोई अच्छे क्रिकेटर या क्रिकेट एंथुसियास्ट के लिए परिचय का मोहताज नहीं है. इस प्लेट फॉर द मुंबई रणजी टीम and such a seasoned campaigner, such an accomplished cricketer. If he gets going tonight, he will be a sight to watch. And just playing alongside him will be a good lesson for not just the I.R.S players, but also some of the G.S.T players as well. Prasad Pawar into action from the far end. The man on strike, Shankar, 71 for 1 at the end of 8 overs. Straight away into that business area. अच्छा ड्राइव किया, गैप में वो गेंद गई, अच्छी टाइमिंग, कोई मौका नहीं, थोड़ी सी दिशा से भटके थे और प्रहार किया. यहां पर शंकर ने 4 महत्वपूर्ण रन से जोड़े. T20 फॉर्मेट में यही होता है कि जब कभी आपको लूज गेंद मिले, आपको अटैक करना है. हल्के हाथों से बैक टू द बॉलर खेला, 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अच्छी गेंद, हल्की सी अपील की. छिहत्तर रन 1 विकेट के नुकसान पर. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को गेंदबाजी करना पसंद करेंगे प्रसाद पवार. अब तक 17 गेंदों में 23 रन्स बनाए हैं वेदांत ने. चलिए वो उंगली उठी है, बहुत ही अच्छा निर्णय और क्या बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फ्लाइट में चकमा दिया. दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब पेविलियन में आ चुके हैं. देखिए अपने क्लास को दर्शाते हुए वेदांत गाड़िया जैसा एक सक्षम बल्लेबाज जब इस तरह से फ्लाइट में बीट होकर आउट होता है तो ये कहना होगा कि काफी अच्छी गेंद थी. विकेट कीपर प्रथमेश अच्छा कैच लिया. There was a faint nick in it. A good decision. That was a strong appeal. थोड़ा सा उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया अपने जहन में अंपायर राजू पवार ने और फिर वो उंगली उठाई. अंत में सही निर्णय.
बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हुए अनिल दुग्गर, चट्टान जैसा अनुभव, सीनियर क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेट का एक मार्की प्लेयर, बहुत ही शानदार प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली प्लेयर. He can be a match winner both with the bat and the ball, and such a brilliant fielder also. A blockbuster package for the senior cricket at the G.S.T. Anil Duggar. 76 for 2. One more ball to come in this over from Prasad Pawar. Making a comeback here, no doubt about it. Team I.R.S. Aniket and Vedant back in the hut after having made useful contributions to the team. He will be bowling with his tail up here. Prasad Pawar, a wicket in the very first over. That will really take his confidence to the next level. One ball to go in this over. Bowling to the new man, Anil Duggar. Score at the end of 9 overs, 76 for 2. Who's the bowler? Vaibhav. Vaibhav Savant to bowl from the far end. Man on strike, Shankar. Left arm round the wicket. Orthodox bowler. चलिए, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर वैभव के लिए, फ्लाइट में चकमा देते हुए. हल्की सी गेंद नीचे रही. आहिस्ता आहिस्ता इंडियन रेवेन्यू सर्विस की टीम वापसी रचती हुई, काफी सम्मानजनक क्रिकेट का प्रदर्शन इस वक्त करती हुई, ये दिग्गज प्लेयर्स पूरी तरह से अपने हुनर का सटीक प्रदर्शन करते हुए. बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप की चैनल में लगातार गेंदबाजी करते हुए, हल्की सी नीचे रही, बाहर की तरफ भी निकली, वाइड का इशारा. 79 for 2.
Very well bowled, nicely played with soft hands. That could have been close. That really required a direct hit, and if it had to hit the stumps directly, Anil Duggar was a goner. 10 overs 80 for 2. थोड़ी सी खबरदारी का इख्तियार करना होगा क्योंकि रन रेट काफी सम्मानजनक है और IRS टीम के पास भी काफी अच्छी लाइनअप है और ऐसे हालात में कम से कम 165 से 170 या 180 रन से बिल्कुल जोड़ना चाहेंगे टीम GST। प्रसाद पवार अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे। चेंज इन एंड्स फॉर हिम, इन्फिनिटी एंड की तरफ से यानी कि कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर है वो है शंकर। अब तक काफी समय बिताया है विकेट पर। कैसे हो सर? शंकर ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन जोड़े हैं। So yes, he is trying to build his innings. He spent some good time at the wicket. He looks to be set, but needs to continue now. He's up against a quality bowler in the form of Prasad Pawar. Just opening the face of the bat into that deepish gully region. Single taken easily. 81 for 2. Anil Duggar now facing Prasad. Just putting bat to ball, trying to give it the direction, wanting to take that risky single. No, says Shankar. Quite the right call. चलिए वो विकेट कीपर भी थोड़े से बीट हुए वहां पर। प्रथमेश फलस्वरूप 4 रन्स मिले वहां पर 22 के रूप में। महत्वपूर्ण रन्स, स्वागतार्ह रन्स 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा संघर्ष करते हुए इस वक्त अनिल। प्रसाद पवार अपनी शानदार गेंदबाजी के जलवे बिखेरते हुए शोइंग इस क्लास। ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से वैभव। स्ट्राइक पर होंगे शंकर। दुग्गर स्ट्राइक पर होंगे, अनिल दुग्गर। GST के भी सभी अच्छे प्लेयर्स आज लाइनअप में नजर आते हुए। एक अच्छी टीम लाइनअप की है GST ने। काफी अच्छे प्लेयर्स का समावेश है प्लेइंग 11 में, तो इस लिहाज से ये मैच काफी तगड़ा होगा। एक अच्छी शुरुआत के बाद वाकई में कहना होगा कि टीम इंडियन रेवेन्यू सर्विस ने वापसी की है और इस वक्त थोड़ा सा मोमेंटम इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के पक्ष में नजर आता हुआ। ये दो स्पिनर्स की जोड़ी काफी अच्छी गेंदबाजी करती हुई, वैभव और प्रसाद पवार। शिवाजी ने भी काफी अच्छे 2 ओवर्स किए थे।
फास्टर थ्रू द एयर, दिशा से भटके। ये भी एक युवा गेंदबाज है, is coming up the ranks here at the I.R.S team. A little bit of turn and bounce. Well flighted, but slightly away from the batsman. A purposeful spell here by Vaibhav, bowling with a good intent. Well flighted, that is a pitch of a delivery. Beautifully bowled. Beating the batsman in the flight into that good channel around the off stump. Quite wide. The right call. One extra run will take the scoreline to 90 for 2. Yeah, that will give him some confidence. He is too good a player to struggle for a long time. Very experienced. And he nicely applies himself into every match. A missed opportunity there. That should have been taken. That was straight down his throat. And yes, चाटे सर के चेहरे पर वो हंसी नजर आती हुई. कैच छूटा, दिल रूठा, सपना टूटा. एक लाइफ प्रदान होती हुई शंकर को 95. अच्छी टाइमिंग थी, लेकिन वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए. अब गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस होते हुए जय उपाध्याय सर, एडिशनल कमिश्नर GST. एक वाकई में एक बड़े क्रिकेट प्रेमी है जय उपाध्याय सर. He wants to keep playing cricket. Nicely done. Worked away into that mid-wicket region, straight to Vaibhav in the deep. A smallish run up, but he bowls in the right areas. अपनी फिटनेस पर भी काफी काम करते हैं जय उपाध्याय सर. Straight to Ashok Chakravarti in that extra cover region. 98 with that couple. Shankar facing Jay Upadhyay. He gets his man. Just look at the celebration as if they have won the World Cup. Just look at him.
पहले ही ओवर में देखिए, वो रिप्ले देखिए, सेलिब्रेशन देखिए, देयर यू गो, अच्छी गेंद बैट और पैड में से निकली. Ronaldo would have been proud of that celebration. Yes, trying to prove a point or two to his colleagues. In comes Sri Gopal Jaju. Yes, Sri Gopal Jaju was a part of the fantastic grand finale of the G.S.T T10 yesterday. We all were honored and privileged to be witnessing that kind of a superb grand finale. 98 for 3. Shankar back in the hut after a good start. Could not capitalize on the life that he was presented. 20 balls, 19 runs with the help of 2 boundaries. Bowling with his tail up, Jay Upadhyay. Getting a wicket in the very first over. उस विकेट के चलते एक नई ऊर्जा का संचार होगा. There will be a spring in the stride. He will be bowling with his tail up. Yes, the new man in. Of the mark straight away. केवल 4 या 5 यार्ड्स का रनअप, लेकिन गेंद को अच्छी तरह से रिलीज करते, स्मूथ रनअप है. पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए कि वो गेंद अच्छी एरिया में लैंड हो. $100 runs up on the board for GSC with that single off the blade of Anil Duggar. The triple figure mark for GSC, 100 for 3. Quite some cricket left to be played in the match. They will be looking to put up at least 160 plus, isn't it? That's the bare minimum. 175 would be an ideal score. थोड़ी सी गेंद नीचे रही और अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन जाजू का बिल्कुल सही वक्त पर, हालांकि वो एन वक्त था, बल्ले को नीचे लाए. ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर मुकम्मल हुआ. उस अपने पहले ओवर में 6 रन्स दिए, एक सफलता भी उनके हाथ लगी. 13 ओवर के बाद रन संख्या है 101 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. चलिए गेंदबाजी में उतरे अब अरुण. काफी मजेदार इंसान है, जिंदा दिल खिलाड़ी है. गेंदबाजी करेंगे जाजू को. अरुण दोड़ी.
104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अनुशासन से गेंदबाजी करते हुए गत 6 ओवर्स में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छी गेंद, पूरी तरह से अपनी क्रीज के डेप्थ का अच्छा इस्तेमाल किया। एक मैच विनर प्लेयर है अनिल दुग्गर। शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे लेकिन अब काफी सेटल्ड नजर आते हुए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, गेंद नीचे रही, अच्छी लाइन थी। एक अच्छी सम्मानजनक शुरुआत अरुण धोड़ी के लिए। अच्छी लय में नजर आते हुए, अच्छी एरिया में अपनी गेंद को लैंड कराते हुए, आत्मविश्वास भरी शुरुआत। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल चकमा दिया और वो उंगली उठी है। बहुत ही बड़ा विकेट, यस क्या बात है। अरुण धोड़ी ने एक वाकई में बड़े बल्लेबाज को पेविलियन चलता किया है। विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी की, हालांकि बहुत ही पीछे खड़े थे लेकिन सही वक्त पर विकेटों को बिखेर कर रख दिया। प्रथमेश राठी विकेट कीपर जाजू पेविलियन में वापस। भाग्यशाली रहे अनिल दुग्गर। अच्छी गेंद थी। नए बल्लेबाज संजीत श्रीवास्तव। अच्छी आत्मविश्वास भरी शुरुआत। ये भी एक बहुत ही प्रतिभाशाली और हुनरबाज बल्लेबाज है संजीत श्रीवास्तव। अपील तो काफी मजबूत थी लेकिन इशारा किया अंपायर ने कि वो गेंद डाउन द लेग साइड
जा रही थी, अच्छी गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई, बढ़िया शॉट, बहुत ही आला टाइमिंग, एफर्टलेस शॉट। अनिल दुग्गर की इस इनिंग्स का ये पहला चौका। यस, पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट। अपनी इनिंग्स को अब अच्छा स्वरूप देते हुए, एक अच्छा आकार देते हुए, बिल्डिंग इज इनिंग्स अनिल दुग्गर। वेल बोल्ड, अच्छी वापसी की जय उपाध्याय सर ने। एक ठीक ठाक ओवर मुकम्मल हुआ। 15 ओवर के बाद 4 विकेट्स के नुकसान पर 113 रन। द मैच इज इन द बैलेंस हियर। In fact, the momentum is slightly more in favor of a team Indian Revenue Service. Change in ends for Arun Dodi. Starts off with a wide run. 115 for 4. Good wristy work. Sprinted across for that second run. He was running to the danger end. Makes his ground quite comfortably. बिल्कुल सुरक्षित अपने घर वापस, बिल्कुल महफूज, कोई खतरा नहीं। 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा गियर्स शिफ्ट करते हुए अनिल दुग्गर। एक 120 रन
वाकई में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मैच में बड़े पैमाने पे बने हुए हैं इस वक्त आईआरएस। ये मोमेंटम उनके पक्ष में है इस वक्त। चलिए, ये बहुत ही स्मार्ट शॉट है, केवल दिशा दी, गेंदबाज की पेस का सटीक इस्तेमाल किया। उस लाजवाब चौके के साथ रन संख्या 124 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर के बाद अब आखिरी 24 गेंद आनी बाकी है और इन 24 गेंदों में कम से कम और 40 से 50 रन से जोड़ना चाहेंगी टीम जीएससी। गेंदबाजी में अब फिर से एक बार उतरते हुए शिवाजी यादव, स्ट्राइक पर अनिल दुग्गर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर संजीत श्रीवास्तव। एक रोमांचक मोड़ पर यह मैच आज थमा हुआ। Yes, GSC will be looking to put at least 165 runs on the board. So they require at least another 45 runs to be in that fighting zone. He's got a great stamina, Shivaji. Good core strength. Well fielded by Jay sir. A very passionate player. And yes, जय उपाध्याय सर ये इन सभी मैचेस को ऑर्गेनाइज करने में उनकी भूमिका एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं जय सर इस तरह के मैचेस को ऑर्गेनाइज करने में। He makes sure that साल में 4-5 मरतबा इस तरह के मैचेस खेलने को मिले। This is a stress buster event for all our dynamic officers. Badhiya shot on the rise through the line into the gap. A man in hot chase, nicely done. We'll have to be happy with just a couple. Those 2 runs will take the scoreline to 129. We are into the 17th over. 2 balls to come. Nicely working it away into the gap. Well timed. No chance whatsoever. Just what the doctor ordered to Team GSC. 4 runs off the blade of Sanjit. 4 workaholic runs. 1 ball to come in this over. 133 for 4. The match is in the balance here. Could go either ways. What a fantastic shot. Such a good looking shot, but only a couple for that. Indeed, pleasing to watch a shot. That has been referred into the third umpire's box. Jaunty Singh. Pandurang Chate sir, S.K. Sanan sir, Jay Upadhyay ji, Vishal Zaronde sir, Ashok Chakravarti ji, Manish Yadav, Amrit sir, Prasad Pawar, Shivaji Yadav, Prathamesh, and Nilay Bankar, and yes, Arun Dodi.
Yeah, this is an annual event for the GSC, and it's been given out. Good bit of work by the Indian Revenue Service team. Anil Duggar on his way back to the pavilion, and in comes the wicketkeeper batsman for GSC, Jigar Shah. $134 for 5. Half the team in the hut for GSC. The new man in Jigar. Two busy cricketers at the wicket. Two busy batsmen. To bowl to the new batsman, that is Arun Dodi. One extra man being added to that offside cordon. Shivaji Yadav, 3 overs, 21 runs, nothing to show in the wickets column. 1 wicket. Down the leg side, just helping it on its way. Not such good timing. Off the mark with a single, Jigar. 135. Sanjit facing Arun. इस मैच के टॉस को जीता IRS ने और गेंदबाजी का चयन किया. थोड़ा सा जल्दी स्टेप आउट कर गए थे. गेंद की लंबाई को खींचा. बल्लेबाज के शरीर में उस गेंद को किया. स्मार्ट गेंदबाजी. 136 रन. काफी हद तक बांधे रखने में कामयाब हुई है इंडियन रेवेन्यू सर्विस की टीम. शिकंजा कसा है. अच्छी गेंद. गति में परिवर्तन. पहले 5 ओवर्स में 58 रन थे. फिर 10 ओवर में 80 रन हुए. अब 15 ओवर में 113 रन. So that tells you the story that indeed the bowling attack has been quite disciplined. The middle overs have been bowled brilliantly. That's a soft dismissal for Jigar. That catch nicely taken. That is the captain, Pandurang Chatesar. No mistake done. In comes Bhavnit Birdi, sorry. Bhavnit Birdi. This is a good bowling effort here by team I.R.S. Indeed. The first 5 overs belonged to GSC, and the next 10 overs have indeed belonged to the Indian Revenue Service team. No doubt about it. At this stage, having a slight upper hand in the match, the I.R.S. team. This is bread and butter stuff for Bhavnit. That's a no ball. That's a 6. That will be a free hit also. Bonus time for Bhavnit. 7 रन्स भी मिले. फ्री हिट भी अब 143 रन 6 विकेट के नुकसान पर. वेलकम रन्स.
That is crashing into the fence. अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए सीधे सीधा विस्फोटक अंदाज में अपनी इनिंग्स की शुरुआत करते हुए 147 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नेचुरली गिफ्टेड बल्लेबाज है और बड़ी ताकत के धनी भी है, तो जब हिट करते हैं तो गेंद काफी तेज रफ्तार से ट्रैवल करती है। चलिए गगनचुंबी शॉट, आसान सा कैच। अरुण धोड़ी का ये तीसरा विकेट, और वो ये सभी प्लेयर्स को ये स्पेल भूलने नहीं देंगे अगले 1 साल तक। लगातार इस सच्चे स्पेल को याद कराते रहेंगे अपने सभी कुलीग्स को। 18 ओवर के बाद 147 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गौरव देवली, काफी हद तक कब्जा जमाए हुए है टीम IRS। चले, ये थोड़ा सा अजीब और गरीब शॉट खेला, किसी भी तरह से कोई पोजीशन में नहीं थे उस शॉट को खेलने में। टेक बहादुर सिंह अब आते हुए। बिना हमारे स्कोरर्स को कोई तकलीफ दिए हुए वापस आ गए हैं गौरव और नए बल्लेबाज टेक बहादुर सिंह। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद GST की टीम कुछ हद तक लड़खड़ा चुकी है। काफी हद तक पक्ष भारी है टीम इंडियन रेवेन्यू सर्विस का। बड़े पर्पस के साथ गेंदबाजी की है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी की है। दे हैव रियली स्टक टू द जॉब्स। डाउन द लेग साइड, थोड़ी सी दिशा से भटके। देखिए केवल 4 कदमों के रनअप के बावजूद अच्छी पेस को जनरेट करते हुए लेग बाइस के रूप में 1 रन, 149 रन 8 विकेट के नुकसान पर। कुल मिला के अब 10 गेंदानी बाकी है इस इनिंग्स में। दिस इज द जॉब वेरी वेल डन बाय टीम IRS। बहुत ही ज्यादा शॉट गिरी वो, फील्डर से काफी दूर थी। तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, आसानी से तीसरा रन मुकम्मल भी किया।
150 runs up on the board for GSC. 152 रन 8 विकेट के नुकसान पर इस पेनल्टीमेट ओवर में 3 गेंदानी बाकी और कुल मिला के इस पूरी इनिंग्स में अब केवल 9 गेंदानी शेष है. स्ट्राइक पर है टेक बहादुर सिंह, सामना करेंगे अशोक का. संजीत ने अब तक 11 गेंदों का सामना किया है, 22 रन्स जोड़े हैं, एक भी डॉट गेंद नहीं खेली है संजीत ने. थैंक यू यतीश. That is nicely taken toll of. That was a loose one and dispatched from side with disdain. उसे लूस गेंद को सही अंजाम तक पहुंचाया संजीत ने. 4 करारे रन्स प्राप्त हुए, 157 रन 8 विकेट के नुकसान पर. It's a warm welcome to our Honorary General Secretary, Chartered Accountant Sanjay Malu sir. What a shot! That will really have to go in all our books as the shot of the day so far. A terrific shot, effortless shot through the line, on the rise, a free flow off the bat, good transfer of weight, high back lift, good follow through of the bat, superbly done. A terrific shot. With that, the sixth score on to 163 for 8. Yes, starting to get into a reasonable position here, Team GSC. The first over from Ashok went for 17 runs. The second over went for 16 runs. And the third over went for 15 runs. Yeah, they will be happy with just a single. The strike needs to be taken by Sanjit, who really is going all hammer and tongs. Such a purposeful innings is providing that much required impetus to this innings of GSC. Hello, check. चलिए उस 1 रन के साथ रन संख्या अब 165 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर. आखिरी 4 गेंदानी शेष. स्ट्राइक पर है टेक बहादुर सिंह. स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास किया, ऑड बाउंस, कोई मौका नहीं किया. विकेट कीपर भी उस गेंद को रोक पाते. 4 रन 22 के रूप में. Important runs being added here. 169 for 8. The final 3 balls to come. Shivaji Yadav to bowl the final 3 balls. Take Bahadur on strike. 169 for 8. This already is a fighting total. Well directed short pitch delivery. Just giving it the direction, putting bat to ball. Not trying to hit the ball hard. Single taken, 2 balls to come. 170 for 8. Yes, the set batsman Sanjit Srivastava will be looking to end this innings with a flourish, maybe with a couple of boundaries or at least one hit over the fence. And never mind that run out at the non-striker's end. It was important for Sanjit Srivastava to try and get back to the strike. So not much harm done in spite of that wicket being lost. Nothing much to do for Vaibhav Bogate, who comes in as the new batsman. Yes, he will have a key role to play as a bowler.
For the moment, he'll have to be the non-strikers end. The scoreline at this stage is a good throw by Ashok. The final ball to come. Yes, indeed, Goregaon Sports Club is honored and privileged to be playing host to the dynamic officers of the Indian Revenue Service team. Nicely turned into the gap. That ball will maybe run away. We'll have to wait and watch. The ball has enough steam on it to go past the boundary line. Just what the doctor ordered. Finishing this innings with a flourish here. That is a terrific knock from the blade of Sanjit Srivastava, making sure that Team G.S.T gets to a fighting total, a respectable tally on the board. Yes, this innings from the blade of Sanjit Srivastava has indeed provided that cushion of respectability. But yes, we got to confess that a good bowling effort by Team I.R.S. 175 for 9 at the end of 20 overs. Sanjit Srivastava 38 of just 16 balls with the help of 4 boundaries and 1 staggering 6. Not a single dot ball. A good spell from Jay Upadhyay sir. यस चलिए अब बॉलिंग स्पेल की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करता हूं. Amrit 2 overs 15 runs for no wickets. Tidy 2 overs. Ashok Chakravarti quite expensive 49 runs given away of 3 overs. Is picked up a wicket. Shivaji Yadav 4 overs 29 runs 1 wicket. Pandurang Chatesar 2 overs 11 runs not bad. Prasad Pawar 2 overs 7 runs 1 wicket. Vaibhav Sawant 2 overs 13 runs. Jayashankar Upadhyay 2 overs 14 runs for 1 wicket. Arun Dodi 3 overs 28 runs 3 wickets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bowlers being used by the I.R.S team, wanting to give an opportunity to all the players.
Yes, that ball slightly wobbling, getting some good shape there. Slow through the air, not giving the batsman any extra pace to work him around with. Bowling in that business area. Tidy bowling. The two openers for team I.R.S, Vishal and Nilay. Nilay Bunker, the Deputy Commissioner Customs, has been adjudged to leg before wicket. Nilay Bunker back in the hut. That ball really came in just a wee bit, enough to beat that probing bat. Hello, mic check. Hello, check. Hello, hello. Yes, in comes Prasad Pawar at the crucial number 3 spot. Well bowled. That really read off a length. Is bowling in the right area. This is indeed a two pace to wicket. So yes, the batters will really be wanting to spend a little bit of time at the wicket, gauge the wicket, just look at how this wicket is behaving in the second half, and accordingly then make their plans. The scoreline at the end of the first over, 1 run for the loss of 1 wicket. Off to a good start here to the defense of 175 runs. A successful over by Shankar. Advocate Vaibhav Bagade into action from the far end, that is the in orbit end. A good opportunity for Vaibhav Bagade to showcase his bowling skills, to get some good valuable practice under the belt before the T10 45 plus league starting at the G.S.T from the 11th of April. Quite a few senior cricketers up in action tonight. A good bit of work by Vaibhav in his follow through. Quite a few 45 plus players will be playing the tournament. That is an answer. We'll have to wait and watch. A missed opportunity there. He really judged the ball to a perfection there. Sanjit Srivastava, one of the better outfielders.
He covered the ground in long strides, well judged it to get underneath the ball. At the very last moment, the ball popping out of his hands. Vishal Zaronde, the additional commissioner, G.S.T, coming in as the opener for Team I.R.S. He gets his man. Vaibhav Bagade, just look at his reflex, just look at his reaction. Not much of footwork there. He was rooted into his crease and in the bargain losing his wicket. Not much of footwork. Both the openers back in the pavilion. A couple of very good shots in his innings. Unfortunately, could not capitalize on the reasonable start. Batsman name. Is it Ashok? Yes, Ashok Chakravarti. Yes, that ball coming in just a wee bit, getting some good movement off the wicket. No, 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 says the umpire. But a testing line and length, the ball keeping slightly low. When there is some good assistance for any bowler in the wicket, you need to make sure that you do not go overboard, that you do not overtry. You just got to keep things simple, try and make the ball land in the right area, let the wicket do the rest. A little bit of uppish shot, that is Bhavneet Birdi there in that point region. This will be a good learning lesson here for Vaibhav Bagade to be bowling to the likes of accomplished players such as Prasad Pawar. And yes, Ashok Chakravarti is also quite a seasoned campaigner. Both these batters have got so much of experience behind them. A good, tidy, and a successful over from Vaibhav. Vaibhav will be looking to get into that good form before the 45 plus tournament. That's a big tournament, 45 plus T10 league. So this match is a good practice match for a few 45 plus cricketers who are going to be featured in that event starting from the 11th of April. Shankar to continue from the far end. Prasad on strike. Getting Rajiv Garg into that very fine leg region.
Prasad Pawar is the kind of a batsman who really loves the ball to come onto the bat. But the kind of pace with which both Shankar and Vaibhav bowled, no extra pace for the batter to work the ball around into the gaps. They have to put in that extra bit of work. If Prasad Pawar gets going, he will be an absolute delight to watch. Well bowled. That ball really came in. Ashok Chakravarti, the Deputy Commissioner Customs. Yes, that call was from Prasad. Yes, what I have been continuously mentioning that when you play squarish of the wicket, the man at the non-striker's end has got a better view and he will initiate the calling, whether it be a yes or a no. Fuller length delivery driven downtown. This man is such a seasoned campaigner, such great match temperament, big match player. When the going gets tough, the tough get going. The champion batter, Prasad Pawar at the wicket. Late on that one, Ashok Chakravarti. A couple of deliveries that Ashok Chakravarti has played, he's been slightly late. So he needs to be careful. The scoreline at the end of 3 overs is just 9 runs for the loss of 2 wickets. Still early days. जब तक प्रसाद पवार जैसा बल्लेबाज विकेट पे डटा हुआ है, बड़ा खतरा मंडराता रहेगा जीएससी पर. हुनर की कुबेर प्रसाद पवार. प्रसाद पवार वाकई में टीम आईआरएस की तरकीश में वो विक्रमादित्य तीर है जिससे जीएससी को धाराशायी किया जा सकता है. विकेट पे डटे रहना होगा, लंबी इनिंग्स खेलनी होगी प्रसाद ने. विकेट कीपर जिगर शाह. केवल 5 या 6 कदमों का रन अप, लेकिन काफ़ी अच्छी एरिया में गेंद को पिच कराते हैं. गेंद हल्की सी अंदर की तरफ भी आती हुई, और ये वो काबिलियत भी है उनके पास कि सीधी गेंद भी करे. और ये गगनचुंबी शॉट, लंबी भी गई और ऊंची भी गई. तगड़ा शॉट, बाहुबली छक्का निकलता हुआ अशोक चक्रवर्ती के बल्ले से. वो गेंद उनके रेंज में थी और बिल्कुल करारा जवाब दिया. ये वाला शॉट काफी आत्मविश्वास दे जाएगा अशोक चक्रवर्ती को. जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड. उस छक्के के साथ रन संख्या अब 15 पर. अच्छी वापसी की. गेंद की लंबाई को थोड़ा सा खींचा था, अंदर की तरफ आई, हल्की सी नीचे भी रही.
बिल्कुल सही वक्त पर अपने बल्ले को नीचे लाए अशोक। बैक टू दी बॉलर खेला, रन संख्या थमी हुई 15 रनों पर। एक शांत शुरुआत है यहाँ पर टीम I.R.S के लिए। बढ़िया शॉट, गैप में खेला है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, और उस गेंद को रोकने में बिल्कुल असफल रहे संजीत श्रीवास्तव। इस ओवर का और एक चौका अशोक चक्रवर्ती के बल्ले से निकलता हुआ, अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए अशोक। इस तरह से खेलना उनकी फितरत में ही है, नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है, ज्यादातर हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर निर्भर रहते हैं। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। अब काफी सेट हो चुके हैं अशोक चक्रवर्ती, 2 या 3 अच्छे शॉट्स भी लगाए हैं। तो अब पूरी तरह से फायदा उठाना होगा, इस अच्छी शुरुआत को एक बड़ी इनिंग्स में तब्दील करना होगा। बहुत ही जबरदस्त शॉट, इस मर्तबा कोई गलती नहीं की संजीत श्रीवास्तव ने, बहुत ही बढ़िया कैच। अच्छी टाइमिंग के साथ खेला था अपने शॉट को, लेकिन बहुत ही उम्दा कैच लिया डीप में। पेविलियन में वापस आते हुए अशोक चक्रवर्ती, और उनके स्थान पर अपने बल्लेबाज प्रथमेश राठी, अपने टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है प्रसाद पवार और प्रथमेश राठी की। आक्रामक रवैये को इख्तियार किया था अशोक चक्रवर्ती ने, और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में डीप में कॉट आउट हुए। 4 ओवर के बाद 20 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। शंकर 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। वैभव बगाड़े 2 ओवर्स 15 रन 1 विकेट। ये अब तक की कहानी है, काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। टू विकेट्स यस। गेंदबाजों की ये खास बात होती है, कितने विकेट से लिए हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, लेकिन कितने रन से दिए वो कभी भी ध्यान नहीं रखते। अच्छा योगदान, एक अच्छी शुरुआत ये दोनों ही गेंदबाजों के लिए, शंकर और वैभव बगाड़ी के लिए एक सटीक शुरुआत। मैं बल्लेबाज, एक युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज प्रथमेश राठी स्ट्राइक पर सामना करेंगे शंकर का।
हल्के हाथों से खेला, बड़ी आसानी से अपने खाते को खोला। 1 रन के साथ रन संख्या 21 रन। पूरा दारोमदार मानो इस बल्लेबाज पर हाथ थमा हुआ है। प्रसाद पवार, इस प्लेयर ने मुंबई के लिए प्रतिनिधित्व किया हुआ है। वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन द सिटी ऑफ मुंबई, a top notch first class player. Here's wishing him the very best on behalf of G.S.T. Indeed, a bright future awaits Prasad Pawar. Yes, all these players have somebody like Atul Ranade, Jude Singh to guide them. Loads and loads of experience with somebody like Atul Ranade. He is into the scheme of things at the Mumbai Cricket Association. The mentor and guide, Jude Singh. Not trying to hit the ball too hard, Prathamesh. Just getting his foot to the pitch of the delivery. He's indeed bowling such a tight line here, Shankar. Not a single delivery in the spell of Shankar has been here or there. Wonderful bowling. Keeping things tight here. That should have been stopped in the follow through. You don't want to give away any extra runs popping up. Getting Prasad Pawar into a slightly awkward position. Scoreline at the end of 5 overs is 24 for 3. My scorers, Jaunty Singh and Yatish Duri. Digital scorer, Akash Singh. Fabulous quality coverage on YouTube by Pramod Kashyap and his team. A team of good cameramen, good technicians. A big thank you to the groundsmen, to the staff of GSC. Big thank you to the governing council of GSC for hosting this beautiful match. Our honorary general secretary, chartered accountant Sanjay Malu sir, the chairman of cricket Kaushik Bhai Mehta. Vedanta Gadia now coming in to the attack from the far end. This will be a good contest. Up and coming Mumbai player Vedanta Gadia up against the established batsman from Team Mumbai, Prasad Pawar. This will be a good contest. Two quality cricketers up against each other. Shankar has given away just 9 runs in his 3 overs. Hasn't conceded a single boundary. Very military in his line and length. Good tight spell from Shankar. Nicely getting into the position, watching the ball closely. You got to watch the ball quite late. Very well bowled. That could have easily come into the stumps of that inside-ish edge. Slightly late on that one, Prasad Pawar. This is brilliant bowling, slower to the air. Not just the batsman, but also the wicket-keeper was beaten. He was blinded for a second, that ball coming in from inside the elbow of the batsman. He was in a blind spot there, the wicket-keeper. The moral victory to Vedant Gadia, but 4 runs in that column for the team.
Hmm. Standing tall on that one, getting into a good position. A good flat throw from Bhavnit, but the batsman was comfortably home. The young gun of team I.R.S, Prathamesh Rathi, fresh legs at the wicket. Off to a good start here. Vedant is getting some slow turn and bounce. There is something in this two-paced wicket for a quality spinner. If you bowl slow to the air with into the right areas, you can trouble the batsman. 7 runs from the over. The scoreline reads 31 for 3 at the end of 6 overs. The power play is done with 84 balls and 145 runs to win the match. We are through with the first power play. Customs were nicely poised at the same stage. They were 64 for no loss at the end of the first power play. But after the 6 overs, it was all the way Team G.S.T. Towards the end, it was Team G.S.T. In the middle overs, Team I.R.S. dominated the proceedings. That flourishing innings from Sanjit Srivastava took the team to some respectability. That was a very disciplined effort by the bowlers of the Indian Revenue Service team. Ram to continue with his spell, and this time it's going to be from the combox end. The man on strike is Prathamesh. या पता नहीं बार बार राम ही बोल रहा हूँ. It is Mr. Shankar. Sorry, sir. That's a boundary to the credit of Prasad Pawar. That's the first boundary for him. First boundary to Shankar. This has indeed been such a tight spell. Shankar has really bowled beautifully tonight. He's kept things tight, not trying to complicate things, just keeping things simple, sticking to his basics, sticking to his strong points. The key is definitely not to complicate things in your mind. Yeah, this is a good opportunity for the young Prathamesh Rathi to have some good practice under the belt. And this will be a good lesson for him batting in the company of Prasad Pawar.
Well bowled. That is that corridor of uncertainty, striking that outside the off stump channel. Very, very well bowled, well kept by Jigger. Probing line and length, bringing all his experience into play, Shankar. That is into the gap. That couple nicely taken. With that couple score at the end of 7 overs, 38. A tight spell from Shankar comes to an end. Good workaholic spell, 4 overs, 16 runs. In comes the talented all-rounder from the Combox end, Sanjit Srivastav. The terrific innings from him really took his team to such a good tally on the board. Prasad Pawar playing the waiting game, treating the bowling on its merit. He knows that he's got to stay at the wicket for a very, very long time. If a team I.R.S. have to win this match, that big innings from the champion player Prasad Pawar will have to materialize. Well bowled. The ball landing on the seam, getting good shape, rearing off for length. That took the gloves of Prathamesh. It hurried onto him. Seems to be in good rhythm. Just look at that shot. Unbelievable shot. Getting down on his knees to a seam bowler. That is extraordinary stuff. That would be such an interesting replay to watch. That was a daring shot. It really crashed into that backward square leg region boundary. That was really traveling like a tracer bullet. Superb shot. Good comeback delivery.
inducing that false stroke from Prasad Pawar. Prasad is cross with himself. A good looking copybook style extra cover drive that was straight to Jaju. He had a shy at the non striking end. 2 runs added. Prasad Pawar starting to look dangerous. He's looking to play that big knock. He's got his eye in. Oh, that must have landed on the crack. Definitely landed on a crack. That must have been a big crack. This is not an easy wicket to bat on. It's a two-paced wicket. There's a good bit of work by Jigar, the wicket-keeper, Jigar. With that single from Prathamesh Rathi, the team score at the end of 8 overs moves on to 49 for the loss of 3 wickets. Looks like it's going to be Vedant Gadia. This time he will be bowling from the combox end. Yes, this is an annual fixture. Gurugram Sports Club versus the Indian Revenue Service team comprising of customs and G.S.T players. Quite a few top brass officers also a part of this wonderful festival match. This is a stress buster event for the officers. Vedant to Rathi. ₹50 up on the board for the Indian Revenue Service team. A good productive partnership here from Prasad and Rathi. Still a long way to go. Still early days. Turn and bounce. This partnership is worth now 31 runs. Rathi for the first time facing Vedant. That was fired in, came in with the arm. That was angled in, not much of turn. That was the faster one. Well flighted. Playing it very late, close to the body. Champion players also always have that extra time to play their shots, and they do play late. That is the hallmark of a true champion player, playing late and close to the body. That is beautifully bowled. Did he bowl that Chinaman? We'll have to wait and watch. He tried to bowl a special delivery. We'll have to wait and see. And no, that
almost stuck to its line. Just a little bit of movement. The batsman was beaten. All ends up lock, stock, and barrel. In comes Arun Dodi. See, there was a big gap between bat and pad. That bat has to be right alongside the pad. That is the first basic lesson that any upcoming player really needs to focus on. There cannot be any gap between bat and pad, especially when you're playing on this kind of a testing pitch. It really went through his defense. The new man in Arun Dodi. In the first half, he bowled a good spell, 3 wickets to him. The job is cut out for Arun. His mool mantra will be to give good company to Prasad, try and keep the strike rotating at most times. Just knock off the good balls into the gap, play those balls with soft hands, try and pick up that single, give the lion's share of the strike to Prasad. And whenever an opportunity comes by to hit the loose balls, try and put those loose deliveries away. Because till the time Prasad Pawar is at the wicket, there is no need for Arun Dodi to do anything stupid out there. He just has to treat the bowling on merit, play the orthodox game. Yes, Pandurang Chate sir, the captain is all padded up. Even Shankar Upadhyay sir is padded up, waiting in the wings, both these batters. The early momentum with team G.S.T, no doubt about it. But there's this wonderful man in the form of Prasad Pawar still at the wicket. He will have to hold the fort at one end. Almost it will be like a one-man army for team I.R.S. They desperately need Prasad Pawar to stay at the wicket. Yes, even Pandurang Chate sir is accomplished top order batsman. These guys try and keep playing cricket whenever an opportunity comes by. I'm not too sure if all these officers get to practice regularly, but they are all game for a good game of cricket, especially. Vedant to the new man, Dodi. He was targeting that block hole, the arm ball into the block hole. 9 overs, 53 for 4. The current run rate just a little less than 6 an over. 4 top order batsmen cooling their heels in the pavilion. 175 to 176 runs to win this one. Starting to get a little stiff, but still not out of reach. Sanjit to continue bowling. It's going to be Prasad Pawar on strike. 53 for 4 at the end of 9 overs. 66 balls and 123 runs to win the match. The required run rate 11.18 an over. That is big fish in the net. That huge sound came into the com box. बड़ी मछली जाल में फंसी है. प्रसाद पवार का वो बड़ा विकेट
संजय श्रीवास्तव के क्रेडिट में ये परफॉर्मेंस संजय श्रीवास्तव को सीधे सीधा मैन ऑफ द मैच के दावेदार के रूप में उभर कर लेकर आएगा। ये परफॉर्मेंस संजीत को। कप्तान हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पांडुरंग चाटे सर अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हुए। आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज गेट दैट हेलमेट ऑन। This wicket has got that two paced bounce in it, so always a good thing to wear the helmet on. Why to take a chance? Pandurang Chattisar, the new man in, taking his guard. Sanjay Srivastava bowling to Pandurang sir. Half the team back in the hut, 53 for 5. That was a big wicket of Prasad Pawar. पूरी तरह से इस वक्त कब्जा जमाए हुए गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पूरी तरह से हावी है इस वक्त IRS टीम पर। ऑन द राइज खेला एक आत्मविश्वास भरा शॉट ऑफ द मार्क। पूरी तरह से अपनी काबिलियत में विश्वास जताना होगा टीम IRS ने। देखना है कि प्रसाद पवार की अनुपस्थिति में अब ये टीम किस तरह से अग्रसर होती है। अब ये कयामत की घड़ी आ चुकी है IRS के लिए। तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर इस मैच में बने रहना होगा, बड़ी शिद्दत से खेलना होगा, आखिरी लम्हे तक फाइट बैक करना होगा, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा टीम IRS को इस वक्त। अच्छी गेंद और उतनी अच्छी टाइमिंग। अरुण धोड़ी अपने टीम का एक अच्छा ऑलराउंडर है। अच्छी गेंदबाजी की और एक अच्छी शुरुआत इस वक्त हासिल हुई है। थोड़ा सा विकेट पे रुक कर खेलना होगा, लंबी इनिंग्स खेलनी होगी। गति में परिवर्तन किया और ये आसान सा कैच पांडुरंग चाटेसर को पेविलियन चलता किया है संजय श्रीवास्तव ने अपने इस ओवर में, और एक विकेट प्राप्त होता हुआ और एक सफलता इनके हाथ लगती हुई। बिल्कुल अब ये 2 विकेटों के चलते संजय श्रीवास्तव इस मैच के सबसे तगड़े मैन ऑफ द मैच के दावेदार होंगे। हकदार तो मैं अब तक नहीं कहूंगा, लेकिन दावेदार बिल्कुल उन्हें कहूंगा। पांडुरंग सर की रेंज में वो गेंद थी, थोड़ा सा अपिश खेला, गेंद को नीचे नहीं रख पाए। नए बल्लेबाज एडिशनल कमिश्नर GST मिस्टर जय उपाध्याय। He loves the game. He's a good sportsman, a fierce competitor. He wants to be involved in the scheme of things at all times. You cannot keep somebody like Jay Upadhyay away from the game. But these are testing times. इस वक्त पूरी तरह से टीम IRS की पारी बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है। Wickets have kept falling at regular intervals. पूरी तरह से बल्लेबाजी की रणनीति को नेस्तनाबूद किया है यहाँ पर टीम GSC ने। शिकंजा कसा है इस मैच पर पूरी तरह से इस वक्त कब्जा जमाए हुए GSC। हालांकि कुछ क्रिकेट खेलना बाकी है, लेकिन बहुत ही अनुकूल स्थिति में। दूसरी तरफ टीम IRS काफी प्रतिकूल स्थिति में।
अच्छी गेंद, देखिए किस तरह से स्टीयर किया पूरी तरह से, गेंदबाज की रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल करते हुए केवल दिशा दी, गैप में खेला, थिकिश आउटसाइड एज, 4 रन मिले। 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दैट वाज वेल बोल्ड, अच्छी गेंद थी। विशेष रूप में एक नए बल्लेबाज के लिए वाकई में कहना होगा कि वो पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद थी। प्रश्न पूछा था उस गेंद के साथ। गेंदबाजी में अब राजीव गर्ग को उतारा है इन ऑर्बिट एंड की तरफ से। स्ट्राइक पर है जय उपाध्याय सर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अरुण धोड़ी। अंपायर इशारा करते हुए कि वो गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप निकल रही थी। थोड़ी सी खबरदारी का इख्तियार करना होगा, विशेष रूप में जब आप स्पिनर को खेल रहे हो। गेंद हल्की सी नीची रहती हुई, विशेष रूप में इस एंड से। अच्छी शुरुआत राजीव के लिए। थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करते हुए, हल्की सी फ्लाइट देते हुए। 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर अब अरुण धोड़ी सामना करते हुए राजीव गर्ग का। एंड ये मौका होगा, वो उंगली उठी है। अरुण धोड़ी का सफर यहीं पर समाप्त होगा। इसके पहले कि वो गेंद को करे, बाहर निकल पड़े थे। गेंद को थोड़ी सी लंबा रखा उस गेंद को। चले, परफेक्ट डिसीजन, द फुट वॉज इन द एयर। एक्शन रिप्ले हम लोगों ने देखा है। द फुट वॉज इन द एयर, 3 इंचेस इन द एयर। अपने बल्लेबाज शिवाजी। सेवन विकेट्स डाउन।
करारा जवाब दिया है, बहुत ही जबरदस्त शॉट. He is not going to play the waiting game, making his intentions absolutely clear here, Shivaji Yadav. That really traveled a long distance. Up and away she goes into the stands. What a terrific shot to get off the mark. $68 for 7. White ball. That was a dolly catch dropped by Bhavnit. That should have been taken with closed eyes. $70 for 7. 11 ओवर के बाद 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर. 54 गेंदों में 106 रनों की दरकार, यानी कि आस्किंग रन रेट करीबन 12 से थोड़ा सा कम है. Just a fraction less than 12 and over more than 11.5. In comes the master class, Anil Duggar. That is a suicide. आत्महत्या की है जय उपाध्याय सर ने.
The new man in Manish Yadav, the Deputy Commissioner Customs. चलिए 4 रन्स मिले, काफी अरसे के बाद ये 4 रन्स मिले वाइड के रूप में, यानी कि कुल मिला के 5 रन्स खाते में जुड़ेंगे। बिल्कुल एक आखिरी उम्मीद की किरण शिवाजी यादव। इस वक्त ये मामला काफी पेचीदा है आईआरएस के लिए। हल्का सा टर्न, अपनी अच्छी लाइन और लेंथ के लिए काफी सुर्खियों में बने रहते हैं जीएससी पर अनिल दुग्गर। काफी टूर्नामेंट्स उनके समाज के लिए और भी सारे टूर्नामेंट्स खेलते पूरे मुंबई शहर में। बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त बॉलिंग, शानदार बॉलिंग, that really opened the batsman no ends. End of a tight over from Anil. 12 overs, 78 for 8. The writing on the wall. Your guess is as good as mine. Shankar Upadhyay sir will be very unhappy with that run out. फेस्टिवल मैच में रन आउट होना यानी कि ये घोर अपराध है. इट्स अ कार्डिनल सिन. हाउ कैन एनीबडी गेट रन आउट इन अ फेस्टिवल मैच? Manthan being brought into the attack. He's got a chance to bowl. That's a no ball, quite the right call. A free hit. That free hit to Manish Yadav. A little bit of yes and no, yes and no. In the end, decide not to take that run. That's curtains for Shivaji. केवल औपचारिकता बाकी अब. The last man, Amrit. बिल्कुल संगीन हो चुका है ये मामला अब डीआरएस के लिए. केवल औपचारिकता बाकी. A mountain to climb. ये तो बिल्कुल अब मेरे ख्याल से 25वें स्टंप पर ये गेंद थी. नॉट अ वाइड, दैट्स अ वाइल्ड डिलीवरी. 5 रन्स मिले.
all the way down the leg side, just helping it on its way. Amrit, 90 for 9. End of over. Over number 13, 94 for 9. Looking off to polish up the tail. Polish off the tail in good time. That has been referred into the third umpire's box. There you see on screen. That's out. That is curtains. And congratulations to Team Goregaon Sports Club for winning this match. Hands down. Hard luck to Team I.R.S. They won by 80 runs. At one stage, it looked like this would go right down to the wire, but a very clinical performance here by Team G.S.T, resulting in such a big win here for Team Goregaon Sports Club.
Yes, on behalf of the cricket section, on behalf of the chairman, Kaushik Bhai Mehta, a big thank you to the top brass of the Indian Revenue Service and the players as well for making their presence felt at the GSC. It is always an honor and privilege to be playing host to such a wonderful team. We always look forward to play against the I.R.S. team. This is one event that is a regular feature on the annual calendar. But tonight, Team G.S.T was really too good. They were very clinical. Unfortunately, not up to the mark here in this match here, Team I.R.S. That's a big victory. Yes, with this we come to an end of this festival match. Team GSC versus the Indian Revenue Service team. A big thank you once again to the dynamic and upright officers of the Indian Revenue Service. Not to forget their players. They had some good potential in their lineup, but yes, Team GSC was too good for them tonight. Once again, a big thank you to Team I.R.S. on behalf of Kaushik Bhai Mehta, the chairman of the cricket section, and the governing council of the GSC as well. Thank you. Good night. Shabba khair. Take care. God bless. This is your host and host Nishad Kora signing off. I'll request Team I.R.S., the full squad, to move to the restaurant for dinner. Thank you.